Hello and welcome to another episode of the S Cricket Diaries. And today I'm extremely chuffed to have with me a leading cricket podcaster from the other side of the border from Pakistan, Behram Qazi. Hi, Behram, how are you? I'm good, Siddharth, and thank you so much for having me on. It's an absolute pleasure to be here. And yeah, I'm really excited to talk about whatever you have on your agenda. Yeah, thank you. Likewise, Behram, and I have quite a few on my agenda, but hopefully within the time limit that we have, we'll be able to cover as much as we can. But let me first introduce to my audience Behram. Behram Qazi is a leading podcaster, and he works with the podcast company called Grassroots Cricket. He's the content creator for them. And of course, he has his own YouTube channel called Krikazi, and he has had the privilege of interacting with some of the leading people in the field of cricket, including journalists and ex-cricketers as well. And for me personally, it's an absolute honor on behalf of myself and my co-founder of this channel, Srinivasan, to be able to welcome Behram. So thank you so much once again, Behram, for being here. No, I'm, very, very humbled by your words. And yeah, I mean, it's interesting. When I started Crikazi Diaries back in the summer of 2021, July 4th, 2021 was my first video. I had like written pieces prior to that, appeared on TV between 2013 and 2017, but July 2021 is basically when I kind of put my foot down and said that I really want to do this. I was working at the time, so I kind of, churned out a lot of videos, like 94 videos in half a year. So it was more than a video every other day. And that ultimately led me to the grassroots cricket opportunity, which further led me to Pro Sports and Jared Kimber podcasts. So yeah, it's been a journey, but not even close to, being done over here. Like there's still a lot to achieve, and I hope that it only goes north from here. Absolutely, absolutely. We wish all the best to you for that as well. So, Behram, हम ये conversation we'll keep it between we'll shift between Hindi, Hmm. Urdu, and English, and because we have obviously the main audience is Indian speaking audience here, so we'll fix it. I mean, we'll change it a bit. So, Behram, the जो आपने पहले कहा था कि whatever is there on my agenda, तो मेरे agenda में of course you being from Pakistan and one of the voices, so as to say, who talks about Pakistani cricket so much and with so much passion. So obviously, the agenda here is on Pakistan, and there's a lot to talk about Pakistani cricket. For me, as an Indian fan, Behram, agar main कहूँ, like when I started watching cricket back in the 90s, it was, of course, Pakistan was a much stronger team that time, and they had likes of Wasim, Waqar, Saeed, and also from that era, Behram, आपका कौन सा favorite player है and why? Yeah, obviously, whoever has dived deep into the YouTube archives of 90 cricket, Ro Belinda is a legend for that, for making all of those matches available. देखे सारे हैं, मगर obviously, like I was born in 94, तो मैंने 90s cricket तो उस तरह नहीं देखी. But when I started watching cricket, Wasim and Bakar, they were towards the twilight of their careers, right? Saeed Anwar का वो 100 देखा हुआ मैंने इंडिया के खिलाफ 2003 वाला, and that's pretty much the only big score that I've seen from his bat, right? तो मैंने miss out की है उस वाली era पे. इसके pros भी हैं, cons भी हैं. But I would say the one guy who carried on, in the team और आगे फिर lead भी किया, Inzi, was someone who captured my imagination at a very young age, and that was one cricketer जिसकी वजह से बहुत fanfare मेरा उस time पे बड़ा था. And still, I mean, if I am to go back to that time, I would say कि अगर कोई एक cricketer था, या चलो तीन कर देते हैं, तीन ऐसे क्रिकेटर थे जो बहुत ज्यादा उस वक्त पसंद थे. They were Inzi and Shoaib and obviously Shahid Afridi. So those three guys were, superstars when I became an avid cricket fan, and that continued for a bit. फिर ups and downs तो होते ही रहते हैं with Pakistan cricket, quite drastic downs. Unfortunate है, but that is how it was. But then again, ups भी देखने को मिले हैं काफी. अपनी जिंदगी में मैंने मिसबाह उल हक को टेस्ट में लिफ्ट करते हुए देखा, सरफराज अहमद को चैंपियंस ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए देखा, and then that 2009 T20 World Cup, right? So यूनुस खान की टाइम पे जब शाहिद अफरीदी start with the bat. So I mean, it's been a roller coaster. But अब इस उम्र में आके being able to cover, cricket across the globe, of course, Jared Kimber के साथ my work is not like, I'm not a Pakistan correspondent for him. I'm just his co-host. So I have to, follow everything. And I have to formulate opinions on everything. I have to look at different trends and
disruptors within cricket, like the wobble ball has been a big disruptor. Anyone who's followed Kimber's work will know what I'm talking about, and the pace playing pandemic. तो सीखने को बहुत मिलता है, और इस point पे आकर I don't particularly care how well Pakistan does. That's not what drives me. The sport does, and that's what I nerd hard on. और narrative जो होता है ना एक overall, उस पे ज्यादा focus होता है, उसके साथ साथ रहना चाहता हूँ. With respect to how well Pakistan do, I'm really indifferent to it at this point. Okay, well, that's quite interesting, Behram, jo aap keh rahe hain. But however, I would like to dig you a little bit into seeing things more as a Pakistani fan, if you can. And if you talk about, let's say, Shahid Afridi is a name that obviously even in India he's as popular. I'd not like to go back to his very controversial comment when he made some time ago, but. What is it with Afridi? Because if we look at his career, of course he started off as a batsman with that fine century on debut. But अगर हम उसकी career उठा के देखें, he has failed to live up to his promise as a batsman, and of course he went on to do very well as a bowler. So what is it, Behram, amongst an average Pakistani fan that drives that attracts Afridi to thousands of people? Because many times it has happened that when the team has needed him to stay or score that match-winning knock, of course he has done that on occasions, but many times he gets out for a duck, or he used to get out for a cheap score, playing what we would call probably an irrational shot or a needless shot. But having said that, over a period of so many years with not such a great average, he has still been able to capture the imagination of the Pakistani fan. So what was it in Afridi that made him that way, according to you? सबसे पहली बात तो ये कि शायद अफरीदी is batting, any cricket fan would be watching, right? Like कुछ ना कुछ तो होगा. Entertainment guaranteed, like you said. Either he's going to go out cheaply trying to hit big, or he will hit big and literally win Pakistan games that they had no business winning. इस तरह के भी कई मैच हैं. देखो, if you look at his career, he was actually drafted in as a leg spinner. That was his primary role when he was originally picked. उस basis पे team में आया था, and then he scored that ton in his second game, I believe, versus Sri Lanka. I think it was in Nairobi, if I'm not wrong. Fastest 100, kept that record for quite a while till Corey Anderson broke it some years later, and then AB de Villiers absolutely shattered or smashed that record. So I guess his role has been all over the place over the years, but he was ahead of his time. You can call him careless or whatever, but if you had Shahid Afridi in your team right now, you'd be really, happy with that, because current cricket, modern cricket के अंदर जो requirements हैं, शायद Afridi, fulfills that template. He was batting ahead of his time. The average is, I think it's unfair to judge Afridi on average. It should be, like, his career should be judged on impact, at least as a batter. He has a fantastic record versus India and the West Indies in Test cricket, but didn't really cut it versus the rest. In ODI cricket, again, he blossomed into the sort of cricketer जिसके 10 ओवर लेग स्पिन के पक्के होते थे, और वो बड़े crucial overs होते थे पाकिस्तान के लिए. So I would say 2009 to 2013-14 Afridi. I would say, yeah, 13 is probably more accurate. For those 4 or 5 years, he was on the top of his game. He was an elite leg spinner in limited overs internationals. He got that drift. You would cut Shahid Afridi at your own peril, because you always had that fear of chopping on. So I think that he kind of progressed from an opener who slogged to someone who was a reliable 10-over bowler for Pakistan, won them many games with the ball, and he was a bonus with the bat, an absolute wild card. ये मेरी perception, interpretation है. Different लोगों से पूछेंगे, वो आपको different बातें बताएंगे. साउथ एशिया में फैन क्लब्स बड़ी एक चीज होती हैं, तो कुछ लोग they'll gatekeep him and not look at the deficiencies, and other people will just look at the deficiencies and not look at the great things that he was able to achieve. So I think that he was a plus cricketer, and you would definitely want to have him in your side. शायद उससे एक्सपेक्टेशन ही आप गलत लगाकर बैठे हुए थे, मगर इस चीज में भी आप गलत नहीं हो when you say that he didn't live up to his potential, because Afridi could have been more than that with the bat, right? Like आप उस एवरेज को 5-7 रन बढ़ा दो तो पूरी गेम ही बदल जाती है. So वो भी कहना गलत नहीं होगा as such, because we knew just how talented he was. And I mean, controversial statements aside, he's a very charismatic guy and also a good-looking guy. So that helps with respect to superstardom and fanfare.
And I'm sure that also played a part with respect to capturing imaginations. But just one of those cricketers, right, that you'd pay to watch. If Shahid Afridi is playing a game of cricket, आप शायद पूरा मैच मत देखो, मगर अफरीदी बैटिंग करने आया तो आपने टीवी जरूर ऑन करना है. I think you're right, and when you say that वो अपने time से ahead था, because nowadays when we talk about T20 cricket, it's the norm. The way Afridi used to play is now the norm. So and he played that in the 90s. So that way in the 90s. So I think that's quite apt for you to say that. Looking at some of the other players, and as you said, Behram, आपने 2003 से शुरू किया, and 2003 was a low point for Pakistan in terms of World Cup. They could not qualify for the second round in that. And then we saw a slew of players retiring, और उसके बाद फिर नए players आने लगे, जैसे Mohammad Hafiz, Umar Gul, I think came into the picture just after that. And a lot of fast bowlers then came, and Shoaib Akhtar became that senior figure in the side who was now needing to share the burden of bowling with people like Mohammad Sami, Umar Gul, Rana Navidul Hassan. So a lot of these bowlers that came and went by, they had middling careers, and that sort of reflected in the on the Pakistani team in the mid to late 2000s. So what do you think, Behram, was the problem amongst these crop of bowlers who promised so much, and और उन्होंने अच्छे performances भी दिए बीच बीच में, but they couldn't carry on the way probably like Shoaib Akhtar did, in terms of durability. Well, even with respect to Shoaib, there were a lot of disciplinary issues. I can, count a fair few. There was the Nandrolone incident. There was the time where he hit Mohammad Asif with the bat. And yeah, I mean, होता रहता था शोएब के साथ. ये एक मसला ही था. And he was just his own person. And he was just unhinged in the way that he was. And that also reflected in his game as well. But I think that Shoaib Akhtar, he stretched that career. His knees had given up on him a fair time back. And lots of respect for him with respect to that. But even with Shoaib, I feel like sometimes, the discourse that comes out from him, I don't necessarily agree with it. I feel like people in South Asia often deal in extremes, and I'm not that sort of guy, right? Polarization काफी हो जाती है, तो ये एक है मसला यहाँ पे मुझे जो फील होता है. मुझे कभी कभार other side of the border में भी ये चीज नजर आती है. I'm not saying that they're all like that, मगर इंडिया सारे मैच जीत कर एक मैच हारेगी और पीछे पड़ जाएंगे इंडिया के. केएल राहुल के पूरे करियर में उसको शायद उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली होगी जितनी उसको क्रिटिसिज्म मिली है. हालांकि केएल राहुल किसको नहीं चाहिए अपनी टीम में? हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू गेट दैट सॉर्ट ऑफ बैटर हु कैन बैट फ्रॉम एनी पोजीशन फ्रॉम 1 to 6 एंड आल्सो कीप विकेट, राइट? एंड ही हैज डिफरेंट गियर्स टू हिज गेम एज वेल. तो वो एक मिसाल है. पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे, राना नवीदुल हसन आई थिंक डिड वेल. जितना उसका करियर था, लेट आया था, सही कर गया वो. दैट 6 for 27 or 6 for 29 in India, that'll always stay with us. And as a young fan, that series win, you're 2-0 down in a 6 ODI series and you won that 4-2. वो बहुत बड़ी एक मेमोरी थी. उसमें बैंगलोर टेस्ट की भी बड़ी अच्छी मेमोरी है. और उसी तरह अगर आप एक साल पीछे चले जाओ तो इंडिया पाकिस्तान आई थी, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम. पाकिस्तान वाज विदाउट वसीम, वकार, सईद, ऑल ऑफ दोज लेजेंड्स ऑफ द 90s. एंड पाकिस्तान competed well. 2-2 हो गई थी वो ओडीआई सीरीज भी, एंड India ultimately won it 3-2, then won the test series 2-1, वीरेंद्र सहवाग का 300. जब भी आप किसी भी इंडियन क्रिकेटर से बात करो सीरीज की, तो सिर्फ अच्छी बातें आपको सुनने को मिलती हैं. एंड आई फेल्ट दैट. I was in the crowd in that Rawalpindi game where Sachin became the first Indian to score 100 on Pakistan soil. India lost that game. Chase नहीं हुआ था उनसे. They fell like 13-14 runs short, if I You're can talking recall. about the ODI game. Yeah. Yeah. तो आपको वो प्यार फील हो रहा था, सबके लिए तालियां बज रही थी. पाकिस्तान में ये एक चीज मैं फील करता हूँ कि दिस इज समथिंग दैट दे डू राइट, द क्राउड, इज दैट ऑपोजिशन को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ पे. अगर आप आकर 100 या 50 या 5 लो तो काफी ठीक ठाक आपके लिए तालियां बजती हैं. मोर सो मे बी नाउ बिकॉज क्रिकेट चली गई थी पाकिस्तान से, तो अब नो वन टेक्स इट फॉर ग्रांटेड. कोई बड़ी टीम आती है तो सब बहुत खुश होते हैं. मे बी दैट्स पार्ट ऑफ द रीजन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, राइट, जिस टाइम पे ये मसले नहीं थे. तब भी यार ठीक ठाक, लाइक मैंने खुद सचिन के लिए तालियां बजाई हैं वहां पे रावलपिंडी में बैठ के. और अगर आप उनसे पूछेंगे तो बड़ा स्पोर्टिंग क्राउड था. बड़ी शानदार सीरीज थी वो. इट वाज वन ऑफ दोज building bridges sort of experiences, and you would get to meet इंडियन फैंस इन द स्टेडियम. मेरे साथ बल्कि लालचंद राजपूत बैठे हुए थे उस मैच में. मुझे पता भी नहीं था वो कौन है उस टाइम पे. एंड ही वाज देयर विद हिज बडीज, एंड बहुत बहुत मजा आया था. इट वाज सच अ ग्रेट क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज.
और यार अल्टीमेटली मैं देखो कनाडा भी रहा हूँ 11 साल, मेरे बहुत इंडियन से बातचीत हुई है। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया और पाकिस्तान में उस तरह के लोग नहीं है जो बहुत जरा क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा के हम्म, अंदर ब्रेन वॉश हो चुके हैं उस सबसे, और एक बड़ी वो हार्ड लाइन अप्रोच रखते हैं हम्म, इंडिया या पाकिस्तान की तरफ, wherever depending on wherever you're from. But that's not what the masses are like. I don't think so. Everyone that I've come across, the people don't have this beef amongst each other. It's the states that have that beef, और वो अभी भी चलता आ रहा है, और वो दोनों states की गलती है, ठीक है, इंडिया की भी है पाकिस्तान की भी है। हम्म, There's no real effort over there, and it's unfortunate. And again, these are two countries where religion is misused with politics and the state. It's really really unfortunate. पाकिस्तान में तो चलो ये मसला थोड़ा ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा, मगर इंडिया में भी अब मुझे ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता हुआ नजर आ रहा है इन द करंट रिजीम। एंड आई डोंट नो, आई डोंट लिव देयर, मैं नहीं, आई कैंट स्पीक टू दोज इश्यूज। हम्म, पाकिस्तान में भी अगर आकर आप रहो, if let's say you were to come to Pakistan, you would be treated like a king, and that's how people from the subcontinent do when they get guests. यहाँ पे मेहमान नवाजी is a big cultural thing. तो अनफॉर्चुनेट है कि वी आर वेयर वी आर, हम्म, एंड मतलब दिल तो नहीं चाहता ऐसा हो, मगर फिर ऑब्वियसली जरा रियलिटी चेक भी आप लेते हो और आप कहते हो चलो विल मेक डू विद व्हाट वी गॉट, और right, व्हाई स्पेंड एनर्जी और एक्सपेंड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर जस्ट अ पाइप ड्रीम। तो वो एक है अब चीज जो कि वी हैव टू लिव विद दैट, बट देन अगेन देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ क्रिकेट, एंड Pakistan, even though they have been isolated and they have gone through all of those issues of not being able to play home for the longest time, they're still relevant, and yeah. that's good enough for me. As long as they're relevant, I'm good with that. अगर irrelevant हो जाए वो तो इस मुल्क को वैसे ही नामंजूर होगा, क्योंकि it's a one sport nation. I hope and pray for the day where it's a multi-sport nation. और हम्म, आहिस्ता आहिस्ता आपको वो नजर आ रहा है, the football team did well this year, and आपका भी squash में एक फिर से junior आ गया हमजा नाम से, who won a major title. You've got Arshad Nadeem and his rivalry with Neeraj Chopra and the javelin throw वाली चीज, it's good, it is growing, but आप ये कह लो कि ये बेचारे लोग खुद ही करते हैं जो करते हैं, स्टेट एज सच आपको हेल्प नहीं करता, जो कि इंडिया में केस नहीं है। हम्म, इंडिया में you are given a lot of assistance if you are talented, at least more than Pakistan, and I have felt that. But I'm sorry, what was your original question? I've gone on a tangent over yeah. here. Yeah. No, so my question was about the fast bowlers that came in हाँ, after Wasim and Waqar retired. तो उनमें से apart from Shoaib Akhtar बहुत ज़्यादा durability नहीं रही amongst the fast bowlers. So या देखो कुछ तो आपकी अनफॉर्चुनेटली वो फिक्सिंग के तहत हो गए। मोहम्मद आमिर के एक साल खाए गए, उसकी गलती है। इवन इफ यू आर 17, इतना आपको दिमाग होना चाहिए आपका कि आप अवेयर हो कि ये चीज गलत है। आई वॉज 17 एंड आई न्यू फिक्सिंग वॉज बैड, राइट? शायद उनको ये लगता हो कि यार नो बॉल ही तो करा रहे हैं, मैच नहीं फेंक रहे, तो चलो कुछ पैसे कमा लें। गलत है, गलत सोच है। मगर मैं उसके दिमाग में जाकर सोचना चाह रहा हूँ कि आप प्रिविलेज से नहीं आ रहे, you're able to make a quick buck. Your captain is endorsing it, by the way. आपका कैप्टन बोल रहा है आपको करो, तो उसमें उसको जो वापस लाए थे, I didn't have that much of an issue with that, because of course he was young and the captain was orchestrating it. Mohammad Asif is the real tragic story over here if you really think about it. That guy was special. He could have been really something, and he already was. जो छोटा करियर है उसके अंदर he was something. I yeah. don't think पाकिस्तान में इतना talented bowler कभी आया है, and इसी में तो tragedy है And कि the best thing was that he was not one of those fast bowlers. I think hmm, his speed was in the mid to late 130s probably. But वो I mean, जो early 80 mile per hour or late yeah, 70s. yeah. Yeah. But I've heard from people like Kevin Peterson, when they're Hmm. asked that who was the toughest bowler you faced, a lot of these cricketers from England and Australia take Asif's name. कहते हैं ना वो आसिफ ऑब्वियसली हैज अ डॉजी रिकॉर्ड ऑफ द फील्ड। एक कहावत मशहूर हो गई थी कि फूंकता आसिफ है, झूमती बॉल है। तो ऐसा ही सीन था यार। ही मेड द बॉल टॉक Yeah. इन वेज दैट आर अनइमेजिनेबल। ही वाज द पायनियर ऑफ द वॉबल सीम डिलीवरी, बाय द वे। Mm. आज जो आपकी एक डिसरप्शन आई हुई है क्रिकेट में, हर चीज का एक दौर होता है ना, रिवर्स स्विंग का दौर था, दूसरे का दौर था, अब Yeah. आप वॉबल सीम के दौर में हो। और वो तो यार Mohammad Asif was the person who Jimmy Anderson learnt it from. Stuart Clark picked it up from. Like there were so many people who I, I, credit. I There are remember so many people I who remember credit the it to him. 2006 Karachi Test match show Pakistan Hmm. Crciekt against India. That was the first time when we from India really saw Mohammad Asif Hmm. performing so well, and that memory is still there. Clean bowling Sachin Tendulkar and VVS Lakshman was Hmm. was was an amazing feat to have.
And There's so many great stories from that Karachi test, right? Irfan Pathan hat trick, Kamran Akmal rescue job, Mohammad Asif with the ball. That was a great test match. ठीक है, obviously इंडियन perspective से शायद आपको ना लगता हो क्योंकि बहुत heavy defeat थी और सीरीज भी हार गए थे. But in the annals of history, वो टेस्ट मैच याद सबको रहेगा because it ebbed and flowed beautifully. अब and बाकी फास्ट बॉलर्स जो है ना, एक और भी ये रीजन है. उमर गुल की आपने बात की. I think Gul was quite consistent actually. He wasn't like hot and cold. Gul was consistently good. And even for a decent period of time. हमारे यहाँ पे ना फास्ट बॉलर्स का ख्याल नहीं सही रखा जाता. उनकी इंजरी हो तो उनको रिहेबिलिटेट सही नहीं किया जाता. यू नो, दे आर्ट रैप्ड इन कॉटन वुल लाइक दे शुड बी. दे आर ओवरवर्क्ड. शोएब अख्तर से आप बात कर लें, वो भी आपको यही बताएंगे. उमर गुल वाज नेवर द सेम आफ्टर इंजरी. यू नो, अभी आपको नजर आ रहा होगा शाहीन शाह अफरीदी, एवर सिंस ही इज कम बैक फ्रॉम इंजरी, ही हैजंट लुक्ड लाइक द सेम एनिमल ही वंस वाज. तो ये एक पाकिस्तान में काफी गहरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है. और इसमें बिल्कुल तनकीद भी और क्रिटिसिज्म भी जायज है कि यार आपके पास इतने टॉप ड्रॉ टैलेंट्स आते हैं, आप उनको सही तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, आप उनको तोड़ देते हो. जुनेद खान भी जाया किया आपने. एवरीवन रिमेंबर्स दैट सीरीज, राइट, व्हेन जुनेद खान लिटरली हैड इंडिया ऑन देयर टोज. अगेन देयर आर बर्स्ट्स ऑफ ब्रिलियंस. और पाकिस्तान उस तरह की टीम रही है हिस्टोरिकली जो अपने दिन पे किसी को भी हरा जाती है और जीते हुए मैच हार जाती है. बट ये जो टीम बन रही थी ना अभी, इस साल को निकाल दो आप, जरा एक थोड़ा सा पीछे चले जाओ, बहुत कंसिस्टेंसी आ गई थी इस टीम के अंदर. दे वर एक्चुअली, यू नो, टॉक्ड अबाउट एज अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल यूनिट. yeah. And it's gone south for them as well. Hopefully there's time to recover. Of course, a lot of these guys are young and they have father time on their side. But yeah, it's just like Pakistan की जो क्रिकेट का हाल है आप कह लो, it's a fair reflection of जो मुल्क का हाल है. And it is what it is. But still, I am surprised, astonished, baffled at how Pakistan have still managed to win things in this entire period where any other Yeah. nation probably would have just succumbed. वो शायद Yeah. उतने relevant रह ही ना पाते. या इनफैक्ट अगर हम पाकिस्तानी रीसेंट हिस्ट्री को देखें तो मे बी एक क्लियर लाइन इन द सैंड आता है विच इज द 2009 टेरर अटैक. सो pre 2009 to post 2009, obviously things were very different when Pakistan got isolated, but of course they two were the last two ICC tournament victories have come post those 2009 attacks, you know. एंड द So, मिस एंड द टेस्ट नंबर 1 वाला स्पॉट. ठीक है, रहे होंगे कोई महीने के लिए वहां पे, मगर यार पहुंचे तो सही घर पे. लोग कहते हैं कि यार यूएई में तो खेल रहे थे ना, वो कंडीशंस आपको सूट करती थी. पीपल डोंट रियलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट अ होम क्राउड कैन, यू नो, प्रोवाइड. और अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स अपने प्लेयर्स को इन द फ्लैश देख नहीं रही, तो वो फैंडम किस तरह बिल्ड होगा? ये बात लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं. ये भूल जाते हैं कि प्लेयर्स को उठकर जाना पड़ता है एक और मुल्क अपनी क्रिकेट खेलने के लिए. होम सीरीज भी वो घर ही नहीं होते पूरा साल, या वो अवे टूर्स कर रहे हैं या वो यूएई के अंदर है. वहां पे मिसबा उल हक को बहुत क्रेडिट जाता है, फर्स्ट फॉर यू नो रीब्रांडिंग पाकिस्तान एज नेशन दैट शुड बी रिस्पेक्टेड अगेन. क्योंकि बड़ी ही यू नो चैलेंजिंग टाइम पे उनको कप्तानी मिली राइट आफ्टर द स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल. वहां से जो इमेज बिल्डिंग की उन्होंने, दुनिया में इज्जत हुई पाकिस्तान की. फिर से आप टेस्ट नंबर 1 तक पहुंचे. आपने इंग्लैंड में वो पुशअप मारे, सीरीज ड्रॉ की वर्सेस अ वेरी वेरी गुड इंग्लिश यूनिट, राइट. सो जितनी भी मिसबा उल हक की तारीफ की जाए कम है. पाकिस्तान एज अ स्पोर्टिंग नेशन और एज अ क्रिकेट नेशन आर एब्सोल्युटली इंडेटेड टू दैट मैन. ठीक है, आपकी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का ग्राफ गिर गया होगा उनके दौर में, मगर टेस्ट क्रिकेट में आप समिट पे पहुंचे, आप नंबर 1 पे पहुंचे. दैट्स ह्यूज एंड आई थिंक दैट्स नॉट स्पोकन अबाउट इनफ. yes, that's absolutely true, and I think he hasn't got the credit that he deserves, definitely. But looking at now the batsmen, you know, of course, Behram, मैं थोड़ा अगर मैं अपने time पे जाऊँ, you know, because I probably started watching cricket a little earlier than you, so of course, but Saeed Anwar, Ijaz Ahmed, and so many greats of Pakistani team were there, Inzamam, as you mentioned. So after this, you know, when we talk about world-class batters, I think till Babar Azam came into the picture, for a long time, there was a bit of a gap, a bit of a lull. Of course, you had players like Asad Shafiq and I think who was the other player? I mean, I would Azhar throw in Ali. before those guys, of course, Azhar Ali and Asad Shafiq did really well in that Misbah team. हाँ, when Misbah and Yunus left, तो बहुत बड़ा gap आ गया. They couldn't live up to the expectation, you could say. But Mohammad Yusuf is a name that Mohammad definitely Yusuf. deserves Yes, credit over here. And yes. then Yunus Khan, I think those guys are also unsung heroes. और जिस दौर की आप बात कर रहे हो, उस दौर में उनकी बहुत contributions हैं. Pakistan without that middle order spine of Inzi, Yusuf and Yunus was nothing. Yeah. आपको बहुत ज्यादा मैचेस तो उन लोगों ने जिताए हैं, तो उनको क्रेडिट देना जरूरी है. बैटिंग इज नॉट समथिंग पाकिस्तान इज ट्रेडिशनली नोन फॉर, बट यू स्टिल प्रोड्यूस सम ग्रेट्स इन जावेद एंड जहीर अब्बास. इफ यू गो बैक, हनीफ मोहम्मद,
फिर इंजी, सईद अनवर, ऑफ कोर्स यूसुफ, यूनुस, अजहर और असद एक टियर बिलो है, ठीक है, ऑब्वियसली वो उस टियर पे नहीं है, एंड दोज आर करियर्स व्हिच कुड हैव बीन मोर, बट आई वुड से फिर भी सर्विस बहुत है, और दे वर गुड ब्लोक्स, दे वर नॉट कंट्रोवर्शियल ब्लोक्स, दे वर टीम मैन, तो उनकी इज्जत अपनी जगह है। आई थिंक अजहर अली और असद शफीक ने फिर भी लॉरल्स लाकर दिए आपको। इट्स जस्ट सैड दैट दे कुडंट कैरी ऑन इन द सेम फैशन पोस्ट मिस यू, बट देन यू गॉट बाबर आजम, राइट, एंड बाबर आजम इज अ जनरेशनल टैलेंट, और उसको भी पाकिस्तान में और इवन इंडिया में मैं वहां पे भी देखता हूं कि कोहली रोहित वाली लड़ाई चल रही होती है हमेशा। यार ये क्यों होती हैं चीजें? Why do we have to deal in these extremes? Why can we not be critical of things that we should be critical about and not make it a matter of life and death? ये मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ जो हम चीजों को बना देते हैं ना, ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, एंड इट्स एग्जॉस्टिंग टू कीप अप विद इट। आई लाइक टू शट सोशल मीडिया डाउन जब इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। ठीक है यार, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म और तनकीद बनती है। बाबर स्टार्टेड स्लो, टॉक अबाउट इट, don't talk about it in a way that Babar Azam is the reason Pakistan lose games. That is bizarre. आई थिंक वो स्ट्राइक रेट का इशू हमेशा बाबर आजम के साथ रहता है। And it's a very valid conversation to have. Merit है उस argument के अंदर, मगर उसके अंदर जो nuance है उसको डिस्कस करो। आपने उस चीज को मेन स्ट्रीम बना दी है, आपकी दुकानें चलती हैं इस पे। किसी और क्रिकेटर की बात कर लो यार, और भी 10 लोग खेल रहे हैं, उनकी भी इतनी, उनको भी इतना एयर टाइम दे दो। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर पे क्रिटिसिज्म मत करो, डोंट गेट कीप हिम, बट डोंट obliterate him to the point where it's clearly, at this point I feel like he's mentally exhausted. Talking about Babar Azam, Behram, it's my personal view that ever since probably the highs that he has achieved last 1 year, 1.5 years में हम देखें उसके वैसे टाइप के performances नहीं आ रहे हैं. And the fear for me is that I feel he probably surrounded by cricketers who are at best an average talent. Yeah, if you compare him with others, the fear is that probably he with his string of low scores, will he not be able to achieve what he should achieve, or will he turn out to be in the end and a sort of an average batsman who could not achieve more? Because अगर हम देखें एक big player like बाबर आजम को एक big stage चाहिए, and if you look at the Australian series, uh, he did not perform as well. He had a few half centuries, but that signature performance that a player of his talent and his caliber should show, वो अभी तक वर्ल्ड कप्स में भी नहीं आया है, except probably you can count that performance in 2019 against New Zealand. But then on a big stage, a big player, एक signature performance, वो अभी तक बाबर आजम से आया नहीं है. So what do you think? How do you expect his career to go from here? Of course, we can all predict only, nobody can say with certainty, but how do you see a player of his caliber, how can he achieve greater heights? इसमें दो चार चीजें डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। एनीवन हु वॉचेस क्रिकेट एंड फॉलोज इट क्लोजली, अनलेस you've got agendas or you're trying to mudsling, आप इस चीज को मानोगे कि बाबर आजम इज एन elite बैटर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑफ लेट व्हेन द गोइंग हैज बिन टफ, बाबर हैज नॉट कम अप ट्रम्प्स, दैट इज वेरी वैलिड। इसमें भी कोई शक नहीं कि पिछला साल बहुत बहुत पुअर गए, एंड यू कैन से कि हाँ, मतलब लॉट्स ऑफ प्लेयर्स गो थ्रू अ लीन पैच। विराट कोहली से 3 सालों में 100 नहीं लगा था इंटरनेशनल क्रिकेट में। बट देन अगेन वरीसम बात ये कि बाबर इज लाइक 29 एंड दिस शुड बी बाबर्स पीक टाइम। ये वो वाले गोल्डन ईयर्स है जिसके अंदर बाबर को कैश करना चाहिए। उनमें से 1 साल उसने जाया कर दी है, हो जाता है, मगर इस पे क्रिटिसिज्म भी बनता है, और आपको डर लगता है कि यार, is Babar Azam going to be, is his legacy going to go from the potentially the best batter Pakistan have ever had to someone who didn't live up to his potential? ये एक point है, इसमें कोई शक नहीं है। But then again, another thing to note over here is that Pakistan T20s निकाल दो, bilateral T20s, पता नहीं पाकिस्तान इतनी खेलती क्यों है। वहां पे वो देखना लीडिंग रन स्कोरर भी बन जाएगा दुनिया का, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। मगर यार ओडीआईज और टेस्ट तो आप ज्यादा नहीं खेलते, तो बाबर आजम विल नेवर गेट टू प्ले द अमाउंट ऑफ गेम्स दैट अ प्लेयर ऑफ हिज क्वालिटी शुड। और लोग कोहली वाला कंपैरिजन करते हैं, अनफेयर है। विराट कोहली ने बहुत कुछ अचीव किया, विराट कोहली इज अ बिगर बैटर हर तरह से उससे, ठीक है, मगर अगर आप उनकी ट्रेजेक्ट्री देख रहे होते ना एक टाइम तक, तो वो सिमिलर थी। सही है, तो वो नेचुरली बातें सारी आ जाती हैं। बाबर आजम इज बाबर आजम, बाबर आजम इज नॉट विराट कोहली, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी विराट कोहली। But it's unfortunate that even, let's say he goes through another purple patch,
वो एंड में भी आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे. ही इज नेवर गोइंग टू प्ले एज मच एज कोहली. तो ये बात खत्म ही कर दो आप. देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग दिस कंपैरिजन एट ऑल. बाकी यार, ही हैज बीन अ प्रोलिफिक रन स्कोरर. आपने बात की 2019 वर्ल्ड कप की. इट वाजंट जस्ट द न्यूजीलैंड इनिंग्स, ही हैड अ फ्यू मोर. He was brilliant in that, and that's where you felt like this was the coming of age of Babar. 2021 की T20 World Cup में he was terrific. ठीक है, that was a tournament Pakistan should have won. If we're being frank, ऑस्ट्रेलिया को आपको हराना चाहिए था उस सेमीफाइनल के अंदर. वो बस Australia have had the wood over Pakistan in ICC tournaments, as is the case with Australia and India too, to a certain extent. People across the border will feel the pain. But yeah, I mean, वहां तक तो सब ठीक चला था. फिर T20 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया वाला था, अभी जिसमें पाकिस्तान फाइनल में पहुंची है, very lean patch, but he came good in the semi. So it's not like he cannot perform at all under pressure. मगर जहां तक legacy building और narrative building की बात होती है, इन चीजों को इग्नोर भी नहीं कर सकते कि in recent times उस तरह वो expectation पे आकर नहीं उतरा. This was supposed to be the ODI World Cup for Babar Azam. He was supposed to be amongst the top 3 batters easy. ठीक है, नहीं कर पाया वो. और ये रहेगा, एक धब्बा तो रहेगा. क्या कर सकते हैं इसका? This is sport. This is how, life works. But it's not over for him by any means. He's not even 30 yet. Subcontinent में तो क्रिकेटर्स आराम से 38, 39 तक खेलते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे यही ट्रेंड चलता है. It's not like they're not Australian cricketers जो कहते हैं कि okay, we're 35, 34, we'll call it a day. यार यहाँ पे these guys don't even make as much money. So you understand why they want to carry on as well. So there's so many different, elements that go into this. I still have faith in Babar. I think that he will eventually come good again. एंड अभी भी ठीक है, पाकिस्तान 3 मैचेस हार गई होगी न्यूजीलैंड में. 350s तो मारी है बाबर ने. देयर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ 50s. पहली में ही स्टार्टेड स्लो, तो आप कह सकते हो कैचअप इनिंग्स जो होती है उसका उतना कोई फायदा नहीं होता. दूसरी वाली में ही स्टार्टेड क्विक, स्लो डाउन इन द मिडल. ठीक है, आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम थोड़ा बीच में लूज कर दिया. बट देन अगेन आप ये भी एंगल ले सकते हो कि एट दैट पॉइंट यू वांट बाबर टू एंकर एंड यू वांट एवरीवन टू बैट अराउंड हिम. देयर मल्टीपल वेज टू लुक एट इट. आज जो हुई है इनिंग्स उसकी, जो आज 50 थी, वो तो बिल्कुल ठीक थी यार. वो तो सही पेस पे जा रहा था. आप साथ सपोर्ट मिल जाता उसको, 222 शायद या 224 ना करता पाकिस्तान, मगर चलो 200 तो करना चाहिए था कम से कम आप. सो his role should be defined in the T20 team. ODIs में I don't think there's much to worry about. It's a lean patch. He'll be back. Test cricket में ना, अभी मैं उसको नीचे रखूंगा. जावेद, इंजी, मोहम्मद यूसुफ, Yunus, even Saeed Anwar. Saeed Anwar was opener. He averaged 45 odd and he has some tons in Sena Nations. बाबर आजम की एवरेज ड्रॉप तो होती है सेना नेशंस में. इस चीज को इग्नोर तो नहीं कर सकते. अगर वो 50 प्लस एवरेज कर रहा है बाकी जगहों पे, तो यहाँ पे वो 40 ऑड या लेट 30s इस तरह कुछ कर रहा होगा. दैट डजंट मीन दैट ही इज गार्बेज, बट अल्टीमेटली व्हेन विल कम डाउन टू एनालाइजिंग हिज करियर वंस ही इज लेफ्ट, ही वांट्स दैट एवरेज टू बी हायर. क्योंकि आपको ऑल टाइम ग्रेट कंसिडर होने के लिए हर जगह परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं. बट इट्स नॉट टू से दैट इट्स बियॉन्ड हिम. कर सकता है वो. अफसोस शायद इसी बात का कि वो कर सकता है, मगर इस सब के अंदर ना आप और भी एलिमेंट्स को ऐड करें कि पीसीबी हैजंट पर्टिकुलरली गिवन हिम और ऑफर्ड हिम अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन द लास्ट ईयर. एंड देन जो टॉक्सिक फैन बेस और मीडिया है आपका, वो 24 घंटे उसकी सर पे चढ़ा रहता है. They literally make it hard for him to breathe. I hope he doesn't pay any heed to it. But let's be honest, everyone knows what's going around, in the age of social media. So yeah, I mean, the jury's still out on Babar, the test batter, on where he'll end up. ये भी आप देखें इसमें कि पेस प्लेइंग पैंडेमिक में भी खेला है बाबर. It's been a tougher era for batters. But let's give it some more time. Once he's done, once he calls it a day, फिर देखेंगे आराम से कि बाबर कहाँ रैंक करता है. फिलहाल पाकिस्तान cricket or at least the media and fans should realize that it's not just about Babar Azam. ठीक है, आप उस पे करें criticism, micro analysis करें, बनता है, वो स्टैचर का प्लेयर है. बट और भी कोई बात कर लें यार, और भी चीजें हैं दुनिया में बाबर आजम के अलावा. और अब आपने कहा जैसे और भी कुछ बात करें, तो डेफिनेटली नाउ आई वांट टू, एज वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, बहराम, आई वुड लाइक यू टू थ्रो सम लाइट ऑन द ऑफ फील्ड एक्टिविटीज. सो अब जैसे हम इंडिया से बहुत हम सुनते हैं अबाउट द इंस्टीट्यूशनल lack of support, in terms of PCB as an organization, and system की वजह से कितना पाकिस्तानी क्रिकेट डिक्लाइन हुआ है, in not just the on-field performances but even the system. So where do you think the system needs to get better? The organization, the PCB as a board, what can they do to improve itself and the performances of the players?
आप ये देखो ना कि सिस्टम ने आज तक आपको दिया क्या है। ये तो आपका रॉ टैलेंट कर जाता है जो कर जाता है। ये अगर बीच में कभी अच्छी टीम बनी भी थी, ये सिस्टम ने थोड़ी बनाई थी, ये तो बस बन गई थी। इट्स नॉट लाइक द सिस्टम एवर एड्स दीज प्लेयर्स एंड हेल्प्स देम अचीव ग्रेटनेस और सेट्स देम अप फॉर सक्सेस। इट्स नॉट द सिस्टम इज defunct. It never was there to begin with. It's all too political. ठीक है, आपके अगर पीसीबी के पेट्रन इन चीफ आपके प्राइम मिनिस्टर हो, तो जब भी नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अपने लोग ले आएगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, you'll have to start from a clean slate every single time. फिर obviously people play politics as well, and people have their own agendas. ये past में भी valid रही है चीज़, ये अभी भी to a certain extent valid है. We recently saw that leaked conversation of Zaka Ashraf, जिसके अंदर he made it very clear that he has issues with a certain player agency. जो प्लेयर्स उस एजेंसी के अंडर आते हैं, उनको उस तरह, ठीक है, आप क्रिकेट पे डिसीजंस करो ना। आप बोलो कि यार मोहम्मद रिजवान को नहीं रखना कप्तान क्योंकि हम समझते हैं कि क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से डजंट मेक सेंस। अगर आप ये कह रहे हो कि वो भी तो साया कॉर्पोरेशन का लड़का है, तो फिर तो आप गलत कर रहे हो ना। फिर आप मेरिट बेस्ड डिसीजंस तो नहीं ले रहे, आप तो फिर पर्सनल ग्रजेस रखकर बैठे हुए और अपना पावर प्ले वाली गेम खेल रहे हो। आप यू वांट टू असर्ट कंट्रोल। प्लेयर्स यूनियन आपका है नहीं, प्लेयर्स के लिए आवाज कोई उठा नहीं सकता यहाँ पे। फॉरेन लीग्स, फ्रेंचाइज T20s जहां तक खेलने की बात आती है, एनओसीज के मसले हो जाते हैं। पैसे आप कुछ खास दे नहीं रहे प्लेयर्स को, देर ऑन टेरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। दुनिया में सम ऑफ द least earning international cricketers, at least in amongst test playing nations, they're like right at the bottom, maybe like Bangladesh ke sath comparable. No, I'll have to look at the numbers again, but at one point Bangladesh was like, their cricketers were better paid. अफगानिस्तान से ऊपर होंगे, ठीक है, जिम्बाब्वे से शायद ऊपर होंगे। दैट्स प्रीटी मच इट। द गल्फ between how much Pakistan cricketers earn and the rest of the world earns is massive. It is understated. तो पीसीबी ने किया क्या उस लिहाज से, और ऊपर से like when it comes to accumulating bad press and ill feelings, among supporters, they draw the ire every now and again. आपको लगता है कि इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते, and then they'll go ahead and appoint Salman Butt as the consultant to chief selector Wahab Riaz. ठीक है, बैकलैश के बाद वो एक रात के बाद उतर भी जाता है, मगर आपने गालियां तो पूरी पूरी खा ली है ना। मैंने 4 पॉडकास्ट तो बना दिए ना उसके ऊपर, और बनते हैं। कैसे यार आप एक ऐसे टेस्ट कैप्टन को ला सकते हो एज अ सिलेक्टेड, सॉरी, कंसल्टेंट टू द सिलेक्टर, यार जिसने अपना मुल्क बेचा हुआ एज कैप्टन ऑफ टेस्ट क्रिकेट, व्हिच इज द हायर ऑनर दैट हाईएस्ट ऑनर दैट कैन बी एवर बिस्टोड ऑन अ क्रिकेटर फ्रॉम एनी नेशन। उसको आप कह रहे हो कि आप अब बताओगे कि कौन से प्लेयर आपकी टेस्ट टीम में होने चाहिए। नॉट एक्सेप्टेबल। He can go on and do whatever he wants to do, but he should never be getting a position in power in Pakistan cricket. And मैं जब तक यहाँ हूँ आवाज उठाता रहूंगा इस बारे में। अगर कभी फिर से कोई ऐसी हरकत हुई तो फिर से पीछे पड़ जाएंगे। And Wahab Riaz even said कि वो मीडिया की तरफ से बड़ा वो प्रेशर आया। It seems like some people just want to make this a conversation क्योंकि they have something against the PCB. Get a hold of yourself, right? कौन सा मीडिया था? मुझे तो नजर नहीं आया। मुझे तो सारे लोग नजर आए जो कह रहे थे कि खुदा माफ कर देता है, इंसान नहीं करता, एंड बट शुड बी गिवन अ सेकंड चांस। गिन के मैं अपने 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 आप को इंक्लूड करूं, हालांकि मैं अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा तो समझता ही नहीं हूं। आई एम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? सो या तो आप मेरी बात कर रहे हो, या तो आप वो 2 और लोगों की बात कर रहे हो जो आवाज उठा रहे थे। देयर इज सो मच टॉक्सिसिटी एंड सो मच नॉनसेंस एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड वॉलेटिलिटी with respect to the structure at the PCB. There is no structure, right? यहाँ पे बस everyone's trying to strong arm, और वो आते हैं तो कहते हैं हमारी चीज आ जाए, हमारे बंदे आ जाएं। बाबर पे तो दोस्ती यारी के इल्जाम लगाते रहे आप, पीसीबी पे तो कभी आप दोस्ती यारी वाले इल्जाम नहीं लगाते। देयर इज सो मच आई हैव टू से ऑन दिस, एंड समवन लाइक, अगर आपको ज्यादा सुनना है, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी ब्रीफ सॉर्ट ऑफ यू नो ओवरव्यू ऑफ दिस स्टफ। मैंने इस पे कई पॉडकास्ट भी किए हैं, ग्रास रूट्स क्रिकेट के लिए, प्रो स्पोर्ट्स के लिए, इवन ऑन जैरेड किम्बर पॉडकास्ट अनकवर्ड पे जाएं, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। मैं हर जगह ही बातें करता रहा हूँ। एंड इट्स रियली सैड बिकॉज पाकिस्तान में क्रिकेट इज सो ह्यूज, ठीक है। इंडिया में लोग कहते हैं इट्स लाइक अ रिलीजन, पाकिस्तान में मैं बोलूंगा इट्स लाइक आइडेंटिटी। इट इज आइडेंटिटी। पीपल एसोसिएट टू क्रिकेट एंड इट्स नथिंग यूनाइट्स पीपल इन दिस कंट्री क्वाइट लाइक दिस स्पोर्ट। तो यार आप इसको तो सही तरह चला लो, बाकी तो वैसे ही कुछ ठीक नहीं हो रहा आपसे, इसको तो सही तरह चला लो। तो बस ये कुछ खदशात हैं इसमें, दिल थोड़ा दुखता है जब आप ज्यादा डीप जाते हो इसके अंदर कि यार मतलब वेयर इज द होप ओवर हियर। ये तो बेचारे प्लेयर्स अगर ये भी परफॉर्म करना छोड़ दे फिर रह क्या जाता है, क्योंकि उनकी आप तो एज सच यू आर नॉट सेटिंग देम अप फॉर सक्सेस, आर यू? And that's my beef with the PCB, that you need to set your players up for success. You need to give them a voice. You need to look after their mental and physical well-being.
एंड या आप तो ऑपोजिट करते हो, आप तो बल्कि उनको उतने पैसे भी नहीं देते जितने आप दे सकते हो. सो इट्स रियली रियली क्या आई कैंट इवन, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द एडजेक्टिव एट दिस पॉइंट, बट इट्स जस्ट पुअर, आई मीन टू पुट इट लाइटली. और आपकी आवाज में जो इमोशन है वो बहुत ही क्लियरली एविडेंट है, बहराम. और एंड आई थिंक यू यू एट सम लेवल यू आर स्पीकिंग एज अ पाकिस्तानी फैन एज ऑफ वेल. कोर्स, देखो यार, शुरू में तो हम सब फैंस होते हैं ना. या और मेरा लगाव तो रहेगा अपने मुल्क के साथ भी और अपनी क्रिकेट टीम के साथ भी. यार मैं कनाडा छोड़कर वापस आया हूँ एक सर्टन काम करने, मैंने तो पूरी पूरी जान मारनी है ना. बट एट द सेम टाइम आई एम कमिटेड टू द स्पोर्ट. ठीक है, आई फील पैशनेटली अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, बट दैट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल फॉर मी. मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ. क्रिकेट में जो चीजें होती हैं, देर इंपॉर्टेंट टू मी. पाकिस्तान पे खत्म और शुरू नहीं होती वो. It's just one piece of that puzzle. And as a natural progression to that, I would like to end this with the last question about the inequity in cricket, the Behram Hmm. Quazi. And Pakistan is a very integral part of that inequity, because if you talk about the big three, India, England, and Australia versus the rest, uh, जब हम टेस्ट क्रिकेट देखते थे back in say the 90s and in your case in the 2000s, टेस्ट क्रिकेट was still competitive. Hmm. और टेस्ट teams bilateral series may, even if it was a two test series, there used to be a lot of interest in that. So Behram, now we see, जैसे आपने कहा कि कभी कुछ players हैं जो probably इतना खेल भी नहीं पाएंगे, like Babar Azam, to be Hmm. able to have those kind of stats to back Hmm. him, to back himself. So what is it that we can do, Behram? I mean, of course, बहुत discussions होते हैं about leagues coming up and everything, and Test cricket's death has been written for many many years now. Um, how do you think this inequity can be tackled? Hmm. Acha, so whatever I'm about to say over here is conjecture. Let's start off with that, क्योंकि like I mentioned earlier, this is all a pipe dream. ऐसा होना कुछ नहीं है. कैपिटलिज्म पे चल रही है आपकी स्पोर्ट. इनइक्विटी कहाँ से आती है? कैपिटलिज्म से आती है ना. ठीक Hmm. है, कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो टेस्ट क्रिकेट को अगर आपको जिंदा रखना था ना, आप कोई लीग स्ट्रक्चर बनाते इस तरह का कि यार साल में आप इतने टेस्ट खेल रहे हो, सारे के सारे एक जितने, Hmm. और इन ऑपोजिशन के खिलाफ, एंड एवरीवन प्लेज एवरीवन एंड द सेम नंबर ऑफ गेम्स. वो तो आप कर नहीं रहे. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पांच पांच टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रहे हैं. बाकी लोगों को मर मर के 3 टेस्ट मैच की सीरीज मिलती है. ठीक है, दूसरी चीज यार, द आईसीसी इज जस्ट एन इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट दिस पॉइंट. यू नो, बोर्ड्स जो हैं हर मुल्क के, वो रन करते हैं क्रिकेट, एंड दे डोंट पर्टिकुलरली लाइक ईच अदर, डू दे? अगर करते होते एक दूसरे को लाइक, तो आपको नजर आ जाता. एंड में हो क्या जाना है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड विल ऑब्वियसली सर्वाइव. टेस्ट क्रिकेट वो तो खेलते रहेंगे, बाकी सबका ग्राफ गिर जाएगा. एट बेस्ट आप कह सकते हो कि मे बी पाकिस्तान विल समवॉट compete, मे बी साउथ अफ्रीका, इवन दो with what we're seeing with the SA20 and everything, जो कि उनकी भी मजबूरी है यार, वो भी क्या करें, उन लोगों ने भी तो जिंदा रहना है. T20 क्रिकेट की प्रोलिफरेशन से हुआ ये कि पैसा सारा वहां पे आ गया है, और आगे की आपकी जो जनरेशन है वो भी उसमें ज्यादा अट्रैक्टेड है. मगर टेस्ट क्रिकेट की है कभी भी अपनी जगह दुनिया में, और इस तरह नहीं है कि आप उससे ब्रॉडकास्टिंग वो मनी बना नहीं सकते. आप एक सही वाला स्ट्रक्चर लाते तो आप बना भी सकते थे. बट इनइक्विटी जो आपने देखी है आफ्टर द बिग थ्री एंड इवन लिटिल बिट बिफोर दैट, वो चीजें तो शुरू होने लग गई थी वहां से Yes. ही. Yes. देखो यार, पाकिस्तान को छोड़ भी दो आप, चलो श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, फॉरगेट दीज नेशन, साउथ अफ्रीका. आपने गेम को ग्रो किस तरह करना है अगर आपने ही 1 बिलियन खा जाना है रेवेन्यू से? लाइक व्हाट Hmm. अबाउट द एसोसिएट नेशंस? उनकी उनकी कौन बात करेगा? फॉरगेट, पाकिस्तान विल स्टिल सर्वाइव. कुछ तो पैसे पाकिस्तान को मिलते रहेंगे. वो 6% ऑफ द रेवेन्यू मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उन पैसों से बन ही जाएगा इस मुल्क का. लिमिटेड ओवर्स में तो यू कैन आर्ग्यू कि दे रिमेन रेलिवेंट, बट व्हाट अबाउट द Namibias of the world? What about the Omans of the world? What about the Papua New Even, Guineas of the world? What are even you doing for Kenya, those nations? What are you doing even for Kenya? Kenya, we Yeah. look at how they were strong in the early Hmm. 2000s, and yeah. तो इस पॉइंट पे आप यही देख लें कि टेस्ट क्रिकेट तो मुझे लगता है शायद आगे जाकर कुछ मुल्क खेलना ही बंद कर दें. साउथ अफ्रीका अगर SA20 को प्रायोरिटाइज करिए, जिस पे मैं उनको ब्लेम नहीं करता. दिस इज द नेचुरल थिंग दैट दैट इज गोइंग टू हेल्प देम. यही एक मूव बनती है उनकी. कुछ कुछ हो नहीं सकता. FTP में पहले से इंक्ड थी वो सीरीज, तो वो चेंज भी नहीं कर सकते थे. बट मूविंग फॉरवर्ड, आपको शायद एक इस तरह की रियलिटी नजर आए जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली लीग क्रिकेट ही हो दुनिया में. लेट्स सपोज आईपीएल को बढ़ा देते हैं. वैसे मुझे समझ नहीं आया आईपीएल को वो स्प्लिट क्यों करना चाह रहे हैं. इफ आई वर देम, अगर आपने बढ़ाना ही है तो यार आप जरा टीमें ज्यादा कर कर लीग लंबी कर दो, और उसको जहाँ आप 2 महीनों के लिए चला रहे हो, साल में 4 5 6 मे बी 7 महीनों के लिए चला लो.
And that way, you know, if you kind of break down the games weekends पे और इस तरह सारा Yeah. कुछ, तो शायद आप, Like the football leagues. हाँ शायद आप क्रिकेट की दुनियाई क्रिकेट बदल दो उस तरह. एंड दैट माइट बी ए पॉसिबिलिटी बिकॉज पैसा तो है वहां पे. आईपीएल क्या दुनिया की टॉप 4 अर्निंग लीग्स में से, मोस्ट लुक्रेटिव लीग्स में, ऐसा ही कुछ है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल स्पोर्ट, आई एम नॉट Right. टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. Right. अगर आप एक साल का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ले लो अच्छा सा, तो आप तो गुड हो ना यार. आपको बाकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है. फिर इससे और एक चीज ये होती है कि क्योंकि प्लेयर्स वो खेलना चाहते हैं, तो ओडीआई क्रिकेट जिस तरह किसी ने खेली नहीं इन द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप. लोग वर्ल्ड कप के लिए आ गए, मगर कितना ही उन लोगों ने खेल लिया होगा बीच में. सो ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि देखो ये होना नहीं चाहिए. स्पोर्ट इवॉल्व करती है. इफ फ्रेंचाइज टी20s इज द वे फॉरवर्ड, तो आप उसको एज सच फाइट नहीं कर सकते. मगर इंटरनेशनल क्रिकेट को अगर आपने जिंदा रखना है, तो आपको किसी ना किसी तरह का लीग स्ट्रक्चर लाकर, चलो यार पैसों में इक्विटी नहीं लानी तो गेम्स, नंबर ऑफ गेम्स में इक्विटी ले आओ, सबको उसी तरह का कंपटीशन खेलने को मिले. आप प्रीमियर लीग में देखते हो ना कि सबने वही 38 मैचेस खेलने हैं. ये तो नहीं कि यार आप एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में एक टीम 20 गेम्स खेल रही है, एक टीम 11 खेल रही है. ये तो नहीं एक्सेप्टेबल. एंड दैट्स नॉट हाउ यू विल ग्रो द गेम और इवन सेव टेस्ट क्रिकेट. एंड ओडीआई क्रिकेट तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मरेगी इसके अंदर, क्योंकि टेस्ट के अंदर फिर लोगों का वो अंदर का प्योरिस्ट जाग जाता है. वो कहते हैं नहीं यार, सबसे पुराना फॉर्मेट है, प्रेस्टीज है, विल कीप इट अलाइव. ओडीआई क्रिकेट तो नहीं बचती इसके अंदर, मुझे तो नहीं नजर आ रहा. मे बी दिस इज द लास्ट एफटीपी साइकिल ऑफ ओडीआई क्रिकेट. मे बी we're done and dusted after that, which is in a way sad, but also 3 formats weren't going to be sustainable इस तरह bilateral series करा करा के. तो मैंने जो सोचा था ना, मैंने ये सोचा था कि यार आप पूरा साल कराओ लीग कोई, ठीक है, प्रॉपर, और वट एवर जिसने लीगें खेलनी जाकर खेले. एक वो फ्रेंचाइज वाला सर्किट चल रहा है. हर साल आप एक उसी तरह का टूर्नामेंट करा लो इंटरनेशनल क्रिकेट का, टॉप 10-12 टीम्स का, आईपीएल स्टाइल या T20 World Cup style. Everyone plays everyone, and every year has a winner, and that way you can keep international cricket relevant in T20s. उसका फैनफेयर बढ़ जाएगा. टेस्ट क्रिकेट में यार ठीक है, आप वो लीग स्ट्रक्चर की ड्यूरेशन बढ़ा दो. ऑब्वियसली Yeah. टेस्ट मैच लंबे होते Yeah. हैं, मगर अगर आप लीग स्ट्रक्चर नहीं लाओगे ना, तो ये यही ऐसे ही रहेगी. और अगर श्रेयस अय्यर को 5 टेस्ट की सीरीज मिल रही है और साउथ शकील को 2 टेस्ट की सीरीज मिल रही है, तो नेचुरली श्रेयस अय्यर की प्रोग्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि वो खेल ज्यादा रहा है. ये सिंपल सी बात है. द मोर यू डू ऑफ समथिंग, द बेटर यू गेट एट इट. एंड इफ पाकिस्तान प्लेज 6 टेस्ट ईयर और बीच में 8 महीने आ गए जिसमें आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, यार वो कैसे आप आगे जाओगे? और वो प्लेयर्स भी अपनी पोजीशन के खतरे में रहेंगे, एक सीरीज बुरी गई ड्रॉप ना हो जाए, और वो वाली फॉर्म ही कैरी नहीं कर सकेंगे. पर्पल पैचेस विल नॉट बी पर्पल पैचेस, क्योंकि आपने 8 महीने खेला ही नहीं. देयर इज सो मच यू नो that I have to say about this. I probably only scratched the surface, but inequity in cricket रहेगी. ये नहीं होगा कि ये ठीक हो जाएगी. Unfortunately, cricket will suffer at the hands of it, but पैसे ज्यादा बनेंगे यार. और maybe we're looking at a future where India is the hub of cricket overall, and IPL is the biggest thing in the world. We don't know these things yet. मगर जिस line and length पे चल रही है ये सारी game, हो भी सकता है. Well, Behram, just आपने कहा, we've just probably just scratched the surface, and I hope that you can give our channel some more time in future to get deep into the surface and get to the bottom of it, and really explore all other possibilities that could be there to improve the scheduling and the world of cricket. But I think in the respect of time, I would like to say thank you so much, Behram, for being in the SNS Cricket Diaries, and I hope that we can interact on another time, on another date, with some wonderful, more news, better news for Pakistani cricket, and world cricket in general. But till that time, thank you so much, and have a wonderful day. Yeah, thank you so much for having me. It was an absolute pleasure, like I said earlier. और मैं ना यार खुद आपकी बोट में था not too long ago. I don't know आपने किस लेवल तक प्रोग्रेस की है, बट मैं भी अपना YouTube चैनल चलाता था, मैं भी लोगों को बुलाता था. सबके पास इतना टाइम नहीं होता. I myself have an extremely busy schedule. I work 3 jobs, but मुझे अपना आप याद आ जाता है, तो मैं कहता हूँ कि मैं भी फिर किसी को उस तरह हेल्प कर दूँ. बाकी I am always up for a cross cultural or cross border conversation. यार बातें करने से फासले खत्म होते हैं, ठीक है, हमें ये ज्यादा करना चाहिए. लोगों ने ये जो अस वर्सेस देम नैरेटिव बनाया हुआ है ना दुनिया में, वो एग्जिस्ट इसलिए करते हैं कि आपने कभी लोगों से बात ही नहीं की. ठीक है, इफ यू आर extremely anti-LGBTQ, you've probably never had a gay friend. If you're anti-India, you've never had an Indian friend. If you are an anti-Semite, you've never had a Jew friend. If you're an Islamophobic, you've never had a Muslim friend. Right? लोगों से बात करें, ठीक है, डिस्कस करें चीजें, listen to people, gain perspective, and which is why I love podcasts and conversations alike. So I had a lot of fun, and I can tell you this, that I've done this like
made guest appearances काफी जगहों पे. I thoroughly enjoyed this conversation with you. I think you're good at what you do. So best of luck to you and SNS. And उम्मीद यही करते हैं कि कभी आगे भी आएंगे. And yeah, I hope and wish to see you grow. Thank you. Thank you so much, Behram. And thanks to our audience for watching this. Till the next episode, we see. Take care. Bye.